स्टेटमेंट दिया, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मिलियंस ऑफ पीपल मर सकते थे, वो न्यूक्लियर लड़ाई या न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये तो युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ से जा नहीं रहा था। तो ये मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। ये तो नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई थी, और किसी भी हालत में अगर ये युद्ध पर भी चले जाती तो न्यूक्लियर वॉर पर नहीं जाती। देखिए, यहां पर यूक्रेन और रशिया 3 साल से लड़ रहे हैं, और रशिया ने अभी तक न्यूक्लियर हथियार या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ये तो जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, ये मैं समझता हूं उनका स्टेटमेंट जो है ये जहां तक भारत और पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस विषय में वैसे उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जहां तक रही बात दोनों देशों के बीच में शांति लाने के लिए, या उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, जहां तक कश्मीर का मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। अगर कोई भी डीलिंग इसके साथ होगी, ये बायलैटरल इश्यू होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, रूस या कोई भी बाहर का देश इसके बीच में नहीं आएगा। यहां पर ये सिर्फ 1-to-1 डीलिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कश्मीर का सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 2 हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान कब और कितनी जल्दी भारत को वापस दे, इसके अलावा और कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं है। हाल ये है कि कल पाकिस्तान में भी अपेक्स बॉडी जो उनकी न्यूक्लियर पर डिसीजन लेती है, उन्होंने भी बैठक की है। तो उस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई, लेकिन शहबाज शरीफ के पास तो न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं है। वो तो उनके आर्मी चीफ के पास रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कभी भी उनको न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दिया गया है। ये हमेशा पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल पे है। अभी उन्होंने ये मीटिंग बुलाई, वो तो उनका हक है। क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये पहले भी उसने धमकी दी थी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद हमने बालाकोट किया और धमकियां देता रहा, लेकिन हमने कहा हम ये धमकी नहीं सुनेंगे। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल आउट कर दिया है। क्योंकि एक बात समझना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में, इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि भारत फर्स्ट यूज नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो या किसी और देश के साथ हो, भारत न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है, और उस हिस्से में यह लिखा गया है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार चलाने की कोशिश करता है या न्यूक्लियर अटैक करता है, तब भारत का रिस्पांस मैसिव रिस्पांस होगा। तो ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भारत के ऊपर लगाए, हमारा रिस्पांस मैसिव होगा। भारत को जो नुकसान होना है वो हम सह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अगर पाकिस्तान को इसमें कोई गलतफहमी है, मुझे लगता है वो गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियर धमकी से टेररिज्म को, पाकिस्तान को बढ़ावा देने की को रास्ता नहीं देगा। जब भी पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे जाएगा। और उसके बाद अगर धमकी देता है तो उसको धमकी देने दो। अगर इस्तेमाल करता है तो पूरे तरह से पाकिस्तान को हम बर्बाद कर देंगे। डीजीएमओस की कल भी बैठक होनी है, तो आप किस तरह से अब देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, फ्यूचर? देखिए ये जो जब पहली बार डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, तो ये हमारे डीजीएमओ ने बातचीत शुरू नहीं की, ये पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई। पाकिस्तान बहुत प्रेशर पे है। एक तो उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है, और दूसरा जाके जिस प्रकार से ये उनकी जो एयर डिफेंस है उसमें कमजोरियां पाई गई, और वो भारत के एयर डिफेंस को तोड़ नहीं सका, वो प्रॉब्लम थी उसकी।
اس لیے انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے امریکہ کی بھی مدد کی. مجھے لگتا ہے انہوں نے امریکہ سے یہ بولا ہوگا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم آگے کچھ اور اس پرکار کی کارروائی نہیں کریں گے اور ہماری مدد کرو. تبھی جا کے ان کو آئی ایم ایف کا جو لون ہے $1 بلین کا وہ گرانٹ ہو گیا. اور دوسری بات وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی بھارت نے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بولا. یہ جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ ٹاکس آف ٹیررزم کی ناٹ گو ٹوگیدر, وہ رہے گا. یہ بات چیت ہوگی, یہ صرف ڈی جی ایم او لیول پہ ہوگی کہ آگے جا کے بارڈر کے اوپر کس پرکار سے انہوں نے شانتی بنانی ہے. اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یہ ہماری پالیسی طے ہے. ٹاکس اینڈ ٹیررزم دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے. انڈین ایئر فورس نے بھی کہا ہے کہ اب کچھ دیر میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پورے آپریشن سندور کو کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے. سر, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے آپریشن سندور کو؟ کیا سکسیسفل رہا ہے؟ دیکھیے, جب بھارت کسی دوسرے دیش پہ گیا, ان کی ڈیپ ٹارگٹ سلیکٹ کی اور وہ بھی 9 ٹارگٹس, اور پورے 9 کے 9 نشٹ ہو گئی اور پاکستان اس کو روک نہیں سکا. میں سمجھتا ہوں یہ 100% سکسیسفل آپریشن ہے. اس سے پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی کامیاں بالکل سامنے آ گئی. بٹ زیادہ کر کے جو ہم کیا کرنا چاہتے تھے, جو پہلگاؤں میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اس کا تو بدلہ لینا تھا, اور یہ اس بدلے کا پہلا حصہ ہے. فیز 1 جس کو میں کہتا ہوں. آگے کاروائی 9 ٹھکانے تھے ان کے ہیڈ کوارٹرز, جس کے لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب المجاہدین, ان کے جو ہیڈ کوارٹر تھے اور بڑے بڑے لیڈرز ادھر اس سمے پر جو تھے وہ سب نشٹ ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے, اور یہ پنجاب میں بھی ہوا, یہ بھی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. پنجاب پاکستان کا صرف ایک حصہ ہے جو جہاں تک پنجابی حکومت ہے اس کا خیال رکھتی ہے. اگر یہ بلوچستان میں ہوتا یا خیبر پختونخوا میں ہوتا تو پاکستان کو کوئی فکر نہیں تھا. یہ ہوا پاکستان کے پنجاب میں, اسی لیے وہ گھبرا گئے ہیں. اور ابھی بھارت کی پوری کھلی چھوٹ ہے. ہم نے بالکل صاف ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کبھی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوگا ہم اس کو دشمن کا ایکشن مانیں گے اور پاکستان کے اوپر اس پرکار سے کارروائی چلتی رہے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپریشن بہت سفل پوروک ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہماری ابھی ڈاکٹرن ہے اس میں بھی ابھی تبدیلی آ جائے گی. ہم کمپیل کریں گے پاکستان کو ٹیررزم کو روکنے کے لیے, اور جب تک آگے والے دنوں میں دیکھیں گے کس پرکار سے کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں راستے کو ایک ساتھ ملا کے ہماری پالیسی بنتی ہے, جس سے کہ آگے والے دنوں میں پہلگاؤں والے انسیڈنٹ بالکل پورے بھارت میں کہیں بھی نہ ہو سکے. سر, آفٹر yesterday talk between both of the countries DGMO, Trump tweeted and he says that millions of people could have died. No, I'm not very certain why he cheated. Millions of people could have died. There was no danger of a nuclear war. No danger, 0%. India's nuclear doctrine is very clear. We will never use nuclear weapons first. And Pakistan is aware of the consequences to Pakistan if they use a nuclear weapon. So the question of using nuclear weapons by either side did not arise. You would have seen that in the Russia-Ukraine war, which has been ongoing now for 3 years, despite Russia saying that they may use these weapons, they have never used them. Nuclear weapons are deterrents. They are not to be used. And as far as I am concerned, in this particular conflict which took place over a period of 2 to 3 days, there was never any danger of nuclear weapons being used, even if it had become a full-scale war between India and Pakistan. So President Trump has made that statement. He's an independent person. He's the president of his own country. He's free to say whatever he wants. But I'm absolutely certain there was no danger of a conflagration. And I think he is simply trying to make some brownie points for himself that he has prevented a nuclear war when there was never any possibility of such a war taking place. See, sir, he also says about Kashmir issue. India never consider any statement of any other country on Kashmir issue. You see, President Trump, even in his previous tenure, he has made a statement that, if they want his help, he can resolve the Kashmir issue. I think President Biden also made that statement, and many other world leaders have tried to make that statement. India has made it very clear to them, this is a bilateral issue between India and Pakistan. We will deal with it ourselves. No other country in the world,
the United States, Russia, China, the European Union, anybody. They've got no business to be there. This is the matter which India will address on its own and address it bilaterally with Pakistan. Now, that is one point. The second part, there is only one Kashmir issue which the whole world needs to understand, and that is when will Pak hand over occupied Jammu and Kashmir back to India. Now, this occupied Jammu and Kashmir consists of two regions. Gilgit-Baltistan is one, and Mirpur Muzaffarabad is two. The earlier and the sooner Pakistan hands it back to India, the better it will be for world peace. That is the only issue which is remaining, and India will deal with it bilaterally with Pakistan. So Indian Air Force has tweeted, and they said we will do a press conference and share the details of Operation Sindoor. Sir, according to you, it was a successful operation? Yes, I think this has been a highly successful operation, and the success rate is 100%. Now, let me get a few facts in order. When Pakistan carried out this attack on the 22nd of April, I think it was 2 or 3 days later that the Prime Minister declared from Bihar that we will, and he told the world this, he said, we will take revenge. He said the perpetrators of that crime which took place in Pahalgam will not get away. And after that, the planning started. Now, this was planned by the terrorist groups which are operating within Pakistan, the Lashkar-e-Taiba, the Hizbul Mujahideen, and the Jaish-e-Mohammed. And it was not just Pahalgam. They had carried out these attacks over the past many years. So there was a need to address it. Now, when the Indian Air Force took on these targets on the night of 8th of May, there were 9 targets chosen. And every one of these 9 targets was addressed, and they were destroyed completely. And this operation took place over a period of 25 minutes or so. It was a 100% success. There was no detection. Let me put it this way: the Pakistani air defense systems failed to prevent the attack. That was one. And number two, when the Pakistan tried to do a counter strike on the next night, every single strike of theirs was detected. So what this really proved was that the Pakistani air defense was weak, and India penetrated it very easily, both on the night of 7th, 8th of May, and on the subsequent 2 nights when they went in and destroyed certain targets within Pakistan. Pakistan, when they retaliated one night later, and then on the second night after that, despite the best efforts, they could not penetrate the Indian air defense. So there were 2 aspects to this operation. One was the correct targeting of the correct taking out of the targets with precision, which required very high intelligence efforts and also precision munitions and strategy. Both of them took place, which was 100% right. And then we were prepared to take a counter strike from the Pakistani side, which we did. We destroyed all the incoming UAVs, the drones, the missiles which Pakistan fired at us, and there too the success rate was 100%. So I think it has been a very successful operation. And when the Air Force, when the Indian Air Force gives us briefing, they will bring out those details. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।